Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. How is everybody Good doing? afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Let everyone join. Ma'am, less students are joining. Oh no, they are coming. Excuse me, ma'am. What we will do today? Beta, we'll continue with the chapter. Good afternoon, Good ma'am. afternoon. Good afternoon, children. We'll continue with the chapter, no? Do we have Yes, Hassan? ma'am. But ma'am, so we were on the question answer. Ma'am, we have to, I think, start from perspiration. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, Beta. The cyclone starts. Ma'am, we have to start from precipitation. We have to start from precipitation. Yes. Good afternoon. Yes, ma'am. Good, Good morning. good afternoon, Sarthak. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Last topic of Good our afternoon, chapter. Beta. Yes, ma'am. Precipitation. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. How Ma'am, is how are everybody you? doing? I'm good. How are you all? Ma'am, I am also Yes. fine. Ma'am, fantastic. We are also good. Ma'am, you haven't told enough in each other chapters. With Ma'am, chapters Ma'am Smriti ma'am has said that we will get our syllabus in 2-3 days. Okay. No, not yet decided. Ma'am, Swati ma'am has said that abhi now the syllabus is not yet decided. No, ma'am, Smriti ma'am has said to 7th day that syllabus will be sent in 2-3 days. Yes, ma'am. Yes. But in our class, Smriti, ma'am. I don't know. Smriti ma'am has said something. Yes, ma'am. Ma'am, today, yes, ma'am. Sir, we are saying that, sir, please tell our syllabus, math syllabus. So they're saying not yet decided. Okay. Ma'am, Smriti ma'am has said the syllabus will be sent in 2-3 days. Don't worry. Yes, ma'am. Why worry about the syllabus? Yes, ma'am. Why worry about the syllabus then? Okay. We only focus on chapter. Yes, we need to focus on the learning part, isn't it? Yes, ma'am. Yes, Malay Neel Jha ke naam se who is entering in the class? Malay, is this you? Yes, ma'am. Malay, it is not my class, beta. I have a class with 7th. Okay, so you can exit. Okay, ma'am. You have to join Raman sir's class, I think. Yes, ma'am. Right? Huh? Sorry, ma'am. Who is this Parv? Do we have any Parv in the class? Yes, ma'am. 7th B. Yes. Okay. Yes, ma'am. There is a new thing in 7th. 7B में कहाँ से आ गया? And Okay. 7C. No, ma'am. Not in 7B. No, ma'am. Okay. Okay. Problem solved. 7th C. Yes. Do we have Hassan in the class right now? Yes, ma'am. 7C. Yes, ma'am. 7th B. C. Purita. Disconnected.
Beta, can we have the cameras on, please? I would like to see your lovely, smiling, bright, shine Ma'am, faces. it's ma'am on. Yes, ma'am. It's on, but I can't see everyone, you know. See how pretty Good afternoon, ma'am. Beta is looking with a smile on her face. Yes. Good afternoon, bacha. Okay, fine. Right. Sabhyata Yadav, Naitik Parmar, Utkarsh Sharma, Abhinav Gangwar, Kanak Singh, Atharv Saxena. Can we have the cameras open? How is Soumya Kapoor doing? Ma'am, good. Good. Very nice. Fine. Still students are coming. They take so much of time in joining. Do we have that new student of 7th B in the class right now? Ma'am, Nazaf Ansari. Ha. Nazaf Ansari. Nazaf. Nazaf. Is it a boy or a girl? Boy. She's a girl. She's a girl. Okay. She's a girl. Okay, but has she joined the class? Has she joined the class? Maybe not like that. Beta, where are you? I would like to see. I can't find you on the screen. No, ma'am, she's not here. Okay. Beta, I hope winds, humidity, condensation, these 3 topics are crystal clear to all of you. Yes, ma'am. Anything, Yes, ma'am. anything in these topics? Anything in these topics that are not clear or understood? No, ma'am. All clear, no? Yes. Yes, ma'am. Okay, Hassan, your doubt. Hassan, your doubt. You had asked, no, about the proper nouns. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The troposphere, thermosphere, these are the scientific terms. So we don't call them as proper nouns, right? Right? Ma'am, I consider them proper nouns, ma'am, because proper nouns are that are one in the world. So, ma'am, troposphere is also a particular thing in the world, so it should be written in capital. No, it is fine. See, these are the scientific terms, so we don't consider them as proper nouns. So, where they come initially, they are written in capital. Where they come in between the sentence, they are written as small. Right? I hope your doubt is clear now. Right? Yes, ma'am. Fine, class. I myself didn't remember it. I know you wrote no. Yesterday I saw it. Yes, ma'am. Ma'am, you remember, but I forgot that Ma'am? it was my doubt. Chalo. Yes, Hassan. Ma'am, am I audible? Yes, Hamad Hassan, Hamad Naseem, right? Yes, ma'am. हाँ बेटा बोलो बच्चा. Okay. Excuse me, ma'am. I will always asking, ma'am, am I audible? हाँ, you are audible. Yes, shall we start with the chapter, Darsh? Ma'am, are you asking to me or Darsh? Darsh, Darsh, Darsh Agarwal. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, Excuse me, ma'am. Yes, Daksh. Ma'am, cyclone Ira started from 23 May and ended on 26 May. You are talking about which particular topic? अच्छा देखो बेटा, पहले हम ऐसा करते हैं, हम गप्पे भी मारेंगे, but initially let me explain you precipitation, types of precipitation, and then we'll engross ourselves in 10 minutes का गप्पा शप्पा, okay? Right? Okay, ma'am. Chalo, fine. Okay, so I hope nobody will disturb me in between when I'm explaining, okay? Okay, ma'am. Chaliye. Thank you for your cooperation. Let me share the screen.
Ma'am, Yes, beta. ma'am, can you please share all the diagrams of this chapter, ma'am, which we have drawn and which we have to Draw. which are from the book? I will tell you everything of this chapter. Don't worry. Yes, ma'am. Right? After explanation completed. Yes. After the explanation is completed. Chaliye. We were on this part. Ma'am, we have to start with convectional rainfall. Yes, we have to start with the conventional rainfall. I told you that rainfall, the precipitation, scientifically we call it as precipitation, or in other words, we call it as rainfall. So this precipitation that we receive, Ma'am, that, yes, ma'am, beta, can you tell page number? wait, beta, page number 132 of your book. Okay, ma'am. Ma'am, I'm just coming in a minute. Okay. I told you that rain, snow, and hail, these are the main types of precipitation, right? Right? See, when we say rain, we are talking about the water droplets that fall from the sky, right? Hamad is dancing. Are we singing, Hamad? Okay. Snow is again, these are water droplets only, but because when they come in close contact with the cold temperature condition of the atmosphere, they turn into snow, right? Small cotton balls, very small part of the cotton balls. These are the snowflakes that fall on in the higher altitude areas where the temperature is very low. And hails are basically solid part of ice, which again, when come in contact with, very cold temperature in the atmosphere, or with a cold wave that, it crosses it, these water droplets, they turn into solid ice and they fall in the form of solid ice on the surface of the earth. I hope this is clear. Right, class? Right. Yes, ma'am. Fine. Yes, ma'am. See, this precipitation, sometimes when it is not falling very heavily on the surface of the earth, it is called as drizzle. Right? It is called as drizzle. Right, class? Drizzle can also be called Bundabandi. What it can be? Ma'am, Bundabandi. बूंदा बांदी भी कह सकते हैं, बिल्कुल बूंदा बांदी. When the water droplets are very small. Yes, ma'am. When they are very Ma'am, Ma'am, tiny. like tomorrow. Like drizzle can Sorry, be like called- yesterday. like yesterday. Ma'am, Do we drizzle have can any be Himanshu called- Singh? Beta, do we have any Himanshu Singh in 7? No, ma'am. Who is this Himanshu who is entering? Just a second, beta. Maybe from the previous class. Ma'am, I remind he was in 6th C. Chalo, I'll be just. Beta, Himanshu, are you there? Ma'am, why ma'am students join? I don't know. How do I do? Okay. Ma'am, they know the class well. Hey, Himanshu, you are from 7th class or some other section? Please write in the chat box. Ma'am, you can log the meeting. If I log the meeting, nobody will be able to come. Himanshu will also not able to go. Excuse me, ma'am. And Yes, we'll ma'am. remove him. Ma'am, you can add the waiting room. My waiting room is already open. I always check who is trying to come to the meeting. Okay, fine. Now see, we have to start with the classification of rainfall. See, when we talk of the rainfall, we classify this rainfall into 3 categories, right? So the 3 categories are convectional rainfall,
relief rainfall, Relief rainfall, cyclone. and cyclonic. cyclonic rain. Right? Now, what is this convectional rainfall? Convection. So, Himanshu, you can leave the meeting with any time. It's okay, fine. No issues. Right. Now, see, convectional rainfall. This rainfall is very common in the equatorial region. Right? We all know which area is called the equatorial region. The places which are closer to equator. Right? Yes, ma'am. Closer to equator. Equatorial region. So, because this area is directly faced by the sun. Ma'am, Himanshu Sharma changed name. Beta, Himanshu is a student of some other class. So by mistake, the child has joined. Now I think he has left the meeting. Can you see him in the meeting? Is he there? No. Somebody by name Ahana Sharma is joined now. Ma'am, maybe it is someone else who is joining with another name. एक मिनट रुको. Ma'am, I think that is Ayushi Sharma. That is Ayushi Sharma, not Ahana. Okay. Am I clear? Am I right, Ayushi? This is you only, no? Chalo, let it be. Let it be. Now see this equatorial region that we have, the convectional rainfall is very common in this area. You know why this convectional rainfall is common in this equatorial region? Because of the reason that the earth's surface is heated up, the air touching it is also heated, and this causes the air to expand and become light. Now this light air moves upward and forms convection current. अगर हम बात करते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल की, तो ऐसी कुछ इस तरीके की जो है कन्वेक्शन करंट जो है वो ओरिजिनेट होती हैं फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. ये आपका लैंड हो गया. इस लैंड पे से इस तरीके के कुछ कन्वेक्शन करंट जो है वो आपके बनते हैं और वो ऊपर की तरफ जो है आपका एयर जो है ऊपर की तरफ मूव करने लगती है. To heat it goes up, and then when it goes up it cools down and comes down. Yes. Again. So yes. Now see ये जो आपको एरो जो डाउनवर्ड्स एरो दिख रहे हैं, this is the heat of the sun. ठीक है, ये आपकी जो हीट है, इंसुलेशन है जो अर्थ रिसीव करती है, और जब ये सरफेस बहुत ज्यादा सरफेस को हीट अप कर देती है तो ये कन्वेक्शन करंट्स जो है ऊपर की तरफ मूव करती है, हॉट एयर ऊपर की तरफ मूव करती है, नीचे का एरिया जो है दोबारा से. अब बेटा ये चंदानी कौन है? Nishika Chandani. Nishika Chandani. Mom, she is in 7B. She's a girl. Okay. She is in 7B. When the land heated up. not in 7D. Beta, when the land heats up, in that case what happens? These convection currents are formed, and ये जो है इतनी ज्यादा जो है ये करंट जो है ये इतना ज्यादा वेपर जो है वो कैरी करती हैं, और ये मॉइस्चर जो है these moisture laden air जो है ये हायर स्टेटा पे पहुंच ही नहीं पाती है, थोड़ा सा पहुंचती है, कूल डाउन हो जाती है. और क्योंकि जो इक्वेटोरियल रीजन है आपका, ये वाला जो एरिया है ये कॉन्टिन्यूसली हीट रिसीव करता है, तो क्या होता है शाम को इवनिंग में एग्जैक्ट 4 PM पे भयंकर बारिश होती है, और आप जानते हैं इसको 4 PM रेन भी कहा जाता है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज 4 PM क्लॉक रेन. क्यों? Evening 4 o'clock. हाँ, ठीक शाम को 4 बजे बारिश होती है, और लोग अपनी घड़ियां मिलाते हैं. इक्वेटोरियल रीजन पे जो लोग रहते हैं, अगर उनकी घड़ी आगे पीछे हो जाती है तो जैसी बारिश होती है शाम को, दे अंडरस्टैंड कि ये 4 बजे वाली बारिश हो रही है, और वो अपनी घड़ियों को मिला लेते हैं. इतना रेलेवेंट है, सोचो ये. ठीक है, तो मैम ठीक 4 बजे ना इधर के उधर. हाँ, ना उधर ना उधर, ठीक 4 बजे. Cloud. ठीक है. Ma'am, और how ये is it सारा possible? साल, और आपको पता है बेटा, this convection rainfall it takes place throughout the year. इक्वेटोरियल रीजन में पूरा साल 4 बजे बारिश होती है. Ma'am, how is it possible? बेटा इट इज It's like so basic. आप देखो अभी मॉनसून्स हैं, एक दिन में जरा सी बारिश होती है और तेज धूप निकलती है तो कितना मॉइस्चर कंटेंट इकट्ठा हो जाता है.
और शाम तक क्या होता है, दोबारा बारिश शुरू हो जाती है। अगर आपने ऑब्जर्व करा हो तो जब मॉइस्चर कंटेंट एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा होता है, ऊपर से सूरज भी चमक रहा होता है, तो क्या होता है कि ये जो आपका मॉइस्चर इवेपोरेशन प्रोसेस जो होता है, इट बिकम्स वेरी फास्ट। और जब इवेपोरेशन ज्यादा होने लगती है तो एकदम लो डिप्रेशन एरिया बन जाता है, जिसकी वजह से दोबारा से बारिश हो जाती है। तो इक्वेटोरियल रीजन में क्योंकि डायरेक्टली हीट पड़ती है ऑफ द सन ऑन द लैंड, तो वहां तो इट इज अ डेली process. Every day in the evening 4 o'clock it rains. I hope this is clear and understood. Ma'am, in summers also. Yes. बेटा वहां समर्स ही होती है पूरा साल, समर्स ही रहती है इक्वेटोरियल रीजन में, वहां ठंडा नहीं पड़ता है। So when they like to. हाँ, I hope this is clear to everyone. Ma'am, I know why. Yes, Hassan, tell Naseem. Ma'am, because they are always in the front of sun. हाँ बेटा बताओ बेटा, this is clear to everyone. Ma'am, Yes. yes, ma'am. जी बेटा जहरा बोलो. Am I audible? Yes, you are audible Zehra. Breaking a lot. Ma'am, now relief rate. Ma'am, your voice is breaking a lot. Is my voice cracking? No, ma'am. No, ma'am. बेटा आपकी तरफ ही कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी, मुझे ऐसा लग रहा है. Okay, ma'am. Now talking about the relief rainfall. बेटा ये जो relief rainfall होती है, इसको हम orographic रेनफॉल भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? अब ये जो रेनफॉल है क्या होता है, ये आपके माउंटेन्स हैं, ठीक है. क्या होता है यहाँ पे ये वाटर बॉडी है, ठीक है, ये वाटर बॉडी है. अब क्या होता है यहाँ से मॉइस्ट एयर जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू होती है, ठीक है, और वो ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है, ठीक है. अब क्या होता है कि जब ये विंड, ये जो एयर होती है, ये ऊपर क्लाउड्स बने हुए हैं, ठीक है, ये विंड्स जो हैं ये जब मॉइस्चर से भर जाती हैं अच्छे से, व्हेन दे बिकम हेवी विद द मॉइस्चर, ये ऊपर की तरफ उठने लगती हैं, पेपर्स जो है वो आपके ऊपर की तरफ होने लगते हैं, फिर ये कंडेंस होके जो है बारिश कर देते हैं. अब ये बारिश का क्या सीन होता है, ये इसमें हम ये आपका वाटर, ठीक है, ये आपके माउंटेन्स. इतना क्लियर हुआ? अब क्या होता है कि यहाँ से इवेपोरेशन होता है, ठीक है, इवेपोरेशन होता है, एयर ऊपर उठती है, ये ऊपर जाके कंडेंस हो जाती है, ठीक है. अब जब ये कंडेंस हो जाती है तो क्या होता है, जब ये एयर जो है, ये जो आपका, ये जब एयर ऊपर की तरफ उठती है, मॉइस्चर बेरिंग जो विंड होती है, व्हेन इट मूव्स अपवर्ड्स, तो क्या होता है, ये इतनी हैवी होती है विद द वाटर कि समटाइम्स इट कोलाइड्स विद द सरफेस ऑफ द माउंटेन. जैसे ये माउंटेन से कोलाइड करती है तो ये बारिश जो है शुरू कर देती है. अब क्या होता है, जहां पे बारिश होती है वो वाला एरिया जो है आपका विंडवर्ड साइड कहलाता है. कौन सा एरिया कहलाता है? विंडवर्ड साइड. और जो दूसरी वाली साइड होती है, ये जो दूसरी वाली साइड होती है, इट इज डिप्राइव्ड ऑफ द रेन. यहाँ पे बारिश नहीं होती, यहाँ पे बहुत लेस रेनफॉल होती है, लेस रेनफॉल होती है, क्योंकि जो मॉइस्चर बेरिंग विंड्स होती हैं वो सारा का सारा मॉइस्चर तो अपना विंडवर्ड साइड में रिलीज कर देती है, और जब व्हेन इट बिकम्स लाइट इट मूव्स अपवर्ड्स, और फिर हल्का सा हवा की पुश से जो ये क्लाउड्स होते हैं, ये आपका लीवर्ड साइड पे जो है थोड़ी सी बारिश करते हैं, ठीक है. मैम यस बेटा. Ma'am, this method is followed by the monsoon pattern in India, ma'am. In the western, that's why the western region of India receives heavy rainfall because there are mountains. So whenever the clouds climbed up,
the temperature decreases and it precipitates. Yes, the Western Ghats of our country, they receive ample of Yes, ma'am. rainfall, whereas Rajasthan, which is on the western part of the country, but because of the Aravalli ranges that lie in the leeward side, they lie in the windward side, तो वो राजस्थान में बारिश होने ही नहीं देते हैं बेटा. इसीलिए Yes, ma'am. राजस्थान जो है completely deprive होता रहता है of the rains during the monsoons. Am I clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो ये जो orographic rainfall है, यहाँ पे moisture bearing winds जो होती हैं, they collide with the mountain barriers and the wind rises up, and when the saturation point is reached by these winds, they form the cloud and they rain on the windward side, and the leeward side is deprived of the rain, right? तो इसको क्योंकि ये जो मॉइस्चर बेरिंग एयर होती है, ये सारे पानी को रिलीज कर देती है, रिलीव करती है, इसीलिए इसको हम रिलीफ रेनफॉल भी कहते हैं. Am I clear? Yes, ma'am. ठीक है, ओरोग्राफिक Yes. या फिर रिलीफ रेनफॉल. क्लियर क्लास? Yes, ma'am. चलिए अब हम आ जाते Ma'am, please tell this once again. हैं. बेटा क्या चीज? Which Ma'am, relief rainfall. बेटा रिलीफ रेनफॉल जो होती है, ये आपकी बहुत प्रोमिनेंट होती है उस जगह पे जहाँ पे पहाड़ होते हैं हवा के रास्ते में. ये जो मॉइस्चर बेरिंग विंड्स होती हैं, जब ये पानी ये वाटर बॉडी से जब इवेपोरेशन होता है, तो ये हवा जो होती है इनमें बहुत सारा मॉइस्चर कैरी करके अपने साथ लेके आते हैं, और जरा सी विंड के पुश के साथ जो है ये मॉइस्चर बेरिंग विंड जो है ये ऊपर की तरफ उठती हैं, पर क्योंकि ये हैवी होती है तो ये इनसे कोलाइड कर जाती है. किससे कोलाइड कर जाती है? आपका ये जो आपका ये जो माउंटेन है इससे कोलाइड कर जाती है, और जैसे ये कोलाइड करती हैं तो ये बारिश इस तरफ कर देती हैं. ठीक है, क्योंकि इसका पानी रिलीज हो जाता है, रिलीफ हो जाता है, तो इसीलिए इसको हम रिलीफ रेनफॉल कहते हैं. और जानते हैं ये जो फिनोमिना है, इसकी वजह से हमारा जो वेस्टर्न घाट्स है, हमारे कंट्री के वेस्टर्न घाट्स पे सबसे ज्यादा रेनफॉल इन्हीं वजह से होती है, क्योंकि वेस्टर्न घाट्स जो है आपके विंडवर्ड साइड पे पड़ते हैं, और हमारा राजस्थान जो है वो जो है कंप्लीटली डिप्राइव्ड ऑफ रहता है रेन, क्योंकि वो लीवर्ड साइड में पड़ता है. अरावली, अगर हम इसको अरावली रेंजेस माने तो ये अरावली रेंजेस जो है राजस्थान में बारिश नहीं होने देती हैं, बजाय उसके वो क्या करती हैं, वो वेस्टर्न घाट जो है ये वाला पोर्शन, यहाँ पे ये बारिश खूब सारी कर देते हैं. आई होप दिस इज क्लियर नाउ. Yes, ma'am. राइट? Yes. चलिए ठीक है. नाउ कमिंग टू दी नेक्स्ट Cyclone. इज दी साइक्लोनिक रेन. अब ये साइक्लोनिक रेन, Short. जी बेटा, Ma'am, it is short. हाँ it is short, I know. अब ये साइक्लोनिक रेंज जो होती है ना बेटा, क्या होता है कि आपका जो साइक्लोनिक रेनफॉल, हाँ जी, Ma'am, when the ma'am, can I explain? यस बेटा, Ma'am, when the clouds come towards the west, ma'am, and the warm air comes towards the east, ma'am, when the warm air crashes with the clouds, ma'am, the air becomes cold and it causes precipitation, and this causes cyclonic rainfall. अब हम इसको आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं. ये जो आपका साइक्लोनिक रेनफॉल होता है, इट इज एसोसिएटेड विद द साइक्लोन्स. ये जो साइक्लोन्स होते हैं, साइक्लोन्स जो होते हैं समुद्री तूफान जिनको हम बोलते हैं, दीज आर द साइक्लोन्स which these cyclonic rainfall occurs in the oceans. ओशन कोस्टल एरियाज जो होते हैं वहां पे साइक्लोनिक रेनफॉल होती है. क्या होता है कि when the wind blows from all the sides towards the center of the low pressure area, ये देखो ये लो प्रेशर एरिया बन जाता है. हमने ये आपका जो एक मिनट रुको, हम आपको दिखा देते हैं. हमने प्रेशर बेल्ट्स का पढ़ा हुआ है ना. प्रेशर बेल्ट्स में हमने ये पढ़ा है कि जो इक्वेटोरियल लो बेल्ट होती है, सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट होती है, तो लो से हाई से हमेशा लो एरियाज की तरफ जो है विंड्स मूव करती है. हमने पढ़ा है ना. यस ma'am. तो जब हम अब हम इसी के उसमें पढ़ते हैं कि जब जो आपकी जो विंड्स होती है ना, जब ये from all the four sides, from all these sides, when they move towards the low pressure area,
जब ये लो प्रेशर एरिया की तरफ जाती हैं तो क्या होता है, एक स्पाइरल मोशन देखा है आपने, क्या होता है इस तरीके का, ऐसे Yes, वाला। Yes, ma'am. ये स्पाइरल मोशन जो है वो क्रिएट करते हैं और बहुत तेज स्पीड में, बहुत ही तेज स्पीड में आता है ये, ठीक है। ये जो वर्लिंग साउंड होता है, ये जो वर्लिंग होती है, इसकी वजह से क्या होता है, जो एयर होती है वो ऊपर की तरफ राइज करने लगती है, एयर राइजेस अप, ठीक है। और जब ये ऊपर बढ़ती है तो एयर के अंदर जो मॉइस्चर होता है वो एकदम से, जो वार्म एयर होती है उसकी वजह से क्या होता है, एक तो साइक्लोन आ रहा है, तेज 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 चारों तरफ से हवाएं आ रही हैं, और ऊपर से ये जो आपकी ये जो स्पाइरल मोशन है वो एयर को टेंड करता है टू मूव अपवर्ड। जब ये ऊपर की तरफ जाती है तब जो है ये खूब तेजी से बारिश बरसा देती है, और इसी को हम साइक्लोनिक रेनफॉल कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। yes, ma'am. ये आपका जो मिड लैटिट्यूड एरियाज होते हैं बेटा, मिड लैटिट्यूड एरियाज में इट इज अ वेरी कॉमन रेनफॉल, ठीक है। आपका जो Okay, ma'am. Okay. ठीक है, क्लियर बेटा। Yes, ma'am. Ma'am, now we have a discussion on cyclone Aila. हाँ Ma'am, cyclone Aila. हाँ, साइक्लोन आलिया। Ma'am, I am saying that cyclone Aila started from 23 May 2008 and ended on 26 May. हाँ, on Ma'am? 2009। Yes बेटा। Ma'am, does equatorial region faces the cyclone more or No. tropical region? ट्रॉपिकल एरियाज बेटा, ट्रॉपिकल एंड द मिड लैटिट्यूड्स व्हिच वी हैव। ये जो मिडिल लैटिट्यूड Okay. एरियाज होते हैं ना उनमें ज्यादा होता है सब। ये आपका ट्रॉपिकल सीज जो होती है ना, ट्रॉपिकल सी समझ लो आपका जो पैसिफिक हुआ, आपको रुको हम बता देते हैं कौन सा वाला एरिया है। डू वी हैव अ वर्ल्ड मैप? वर्ल्ड मैप नहीं है आपका। ये जो इक्वेटर के पास जो आपके सीज है ना, उन जगहों पे इक्वेटर के क्लोजर हुई, और आपका मिड लैटिट्यूड में जो सी होती हैं उनमें जो है ज्यादा प्रोमिनेंट होती है ये साइक्लोनिक रेनफॉल, ठीक है। मिड लैटिट्यूड्स, Okay, ma'am. ठीक है, और इक्वेटोरियल रीजन की तरफ, ट्रॉपिकल जो है ना आपका रीजन, राइट। Okay, राइट ma'am. क्लास, चलिए। And then Greenland has like reported its first rainfall, not snowfall. And the हाँ। climate change in the Greenland is taking like is like going very fast. एग्जैक्टली, जस्ट इमेजिन Ma'am, आपका जो ये जो ग्रीनलैंड है ये सबसे कोल्ड एरिया माना जाता है, वहां पे स्नोफॉल ना हो के बारिश होने का मतलब पता है क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट है वहां पे। देखिए आप, इट इज एक्चुअली गोइंग टू हार्म द एनवायरनमेंट। बहुत ज्यादा नुकसान होएगा हमें इस चीज का, राइट। yes, ma'am. चलिए अब क्विकली द डायग्राम्स दैट यू हैव टू ड्रॉ। Yes, ma'am. Tell. चलिए Ma'am, page number 130. Difference in air pressure causes wind. वर्क टू बी डन इन नोटबुक्स। सबसे पहले आप लिखिएगा all the key terms that are there in the chapter. Ma'am, one key term is there. Only, Never I mind, think. do that one only. Then there is a diagram on page 126. Yes, ma'am. है ना? Heat zones of the earth. Yes, ma'am. I Ma'am. got it. Ma'am, there are two diagrams. Ma'am, Yes, these ma'am. are- Temperature. Sea And level, sea breeze. Okay, ma'am. Heat Heat zones of the earth. ठीक है। अब एक दूसरा डायग्राम भी आपको दिया गया है। उस डायग्राम में दिया गया है द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स अपॉन इट्स लैटिट्यूडनल पोजीशन। आप लोग इसको एज अ क्वेश्चन लिखोगे। कैसे लिखोगे? शो विद द हेल्प ऑफ डायग्राम As a question. of a Ma'am, yes, after this, tomorrow we will start exercises. yes, show with the help of a well labeled diagram that the temperature of a place Ma'am, we will do chapter 6 also. depends upon the latitudinal position.
You will write this as a question, and then on the plain side of the notebook, you will be drawing this diagram. I hope I am clear, class. Yes, ma'am. Ma'am, Excuse me, ma'am. Yes, beta. excuse me. जी, Ma'am, this बेटा बोलो. question is there in our Ma'am, book. we are able to No, check it is this not given. also. Beta, Daksh, एक minute. It is not given in the book. That is why I am telling you. What is given as the heading? What is given as the heading? You will be writing it as a question, and you will get this in Okay. exam. I am telling you. That is why you have to do it with the question. The way I am writing it here on the screen, you can see. Right? No, ma'am, I'm not able to see it. Ma'am, you are writing the answer. No, I am writing the question. And where is the answer? Answer is in the diagram only. See, Oh, answer. okay. We got a diagram and Answer. हाँ, How much answer is the diagram. like we will write the question and draw the diagram. Perfect. Yes. Perfect, Punita. Then page 127, you will write Yes, ma'am. with the help of a well-labeled diagram. Ma'am, talking about sea breeze. No. Show that temperature Ma'am, we will do chapter 6 also. Yes, beta. Temperature decreases with increase in altitude. Right? Then this diagram you will be drawing, which is above this statement. ठीक है? Sea breeze. नहीं? Above. बेटा temperature decreases with increase in altitude. ये diagram ऊपर दिया हुआ है ना? Sea breeze Yes, के ma'am. ऊपर. Yes, ma'am. Then you I am will be saying it drawing- sea breeze above. हाँ. Then page 127 sea breeze का diagram आप बनाएंगे. ठीक है? Page 128 land Ma'am, breeze without writing about it. without Ma'am, without like, well labeled diagram बनाएंगे आप ये. I will give you question for this. Don't worry. Ma'am, then air pressure decreases with increase in Ma'am, Yes, Punitha. ma'am, we have to write the key term 1 also because Yes. there is only one key term. There is only one. You need to write that only. I will give you some more definitions. Don't worry. Okay. Then page 129. Okay, ma'am. Pressure belts of the world. Page number 9, 129. Pressure belts of the world. And planetary winds. Planetary winds. One Planetary second. winds of the world. And then, ma'am, Pressure belts of the world and planetary winds of the world. ma'am, we have to draw the conventional rainfall also. Like this is a diagram. Yet, yes, it is there. But then let me come to that first. Okay. ठीक है? Because there is... Yes, ma'am. Then page 120, 130 has a diagram of apply it. Ma'am, 1 second. What? Apply it. There is a question on page 130. Apply it. Green box. Name the Yes, ma'am. instrument. Ma'am, thermometer. हाँ जी, do in Thermometer. notebook. You have to do this in notebook, plain side. Right? Okay, Ma'am. ma'am. Questions also we have to write. The only diagram we have to. Question also you have to write, beta. Then, And my diagram we have to draw. yes. Then page 132, convectional rainfall. Okay, ma'am. Orographic. And 133 Yes. Orographic rainfall. cyclonic rainfall. It should This be was well labeled, beta. It should be a well labeled diagram. And the cyclonic. Page 133. Ma'am, 132 and 132. Yes. So graphic or relief Relief rainfall rainfall. also. Yes. Have a nice day.
Bye, These beta. are there. Meeting is going to end any time. You need to do all this in your notebook. I hope I am clear. Ma'am, this is our homework. This is your Yes, homework. Draw this red till Bye, ma'am. Have a great day. Bye.